ایک بہت ہی انٹرسٹنگ پوائنٹ جو کہ اس ٹاپک کو دیکھ کے مجھے احساس ہوا تھا کہ آج کیوں کر جو ہے قدس ڈے کو جو ہے اتنی اہمیت دی جاتی ہے. ریسنٹلی ہم نے دیکھا کہ میڈیا میں بہت بڑے پیمانے پر جو ہے رشیا اور یوکرین کی وار کو لے کر لوگ باتیں کرنے لگے, بتانے لگے کہ کس طریقے کے آپریشنز جو ہیں لوگوں پر زور زبردستی ہو رہی ہے, کس طرح رشیا جو ہے یوکرین پر زبردستی کر رہی ہے. لیکن وہیں دوسری طرف ایک بہت ہی سکے کا دوسرا پہلو ہم کہہ لیں, ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں ایک ایسا ملک ہے جو کہ 70 سالوں سے بھی زیادہ کسی خاص مذہب کہہ لیں یا کسی خاص ملک کے غلط ارادوں کے تئیں جو ہے وہ اپریس کیا جا رہا ہے, ظلم کا شکار ہوا جا رہا ہے, لیکن اس کے لیے کوئی ملک جو ہے کھڑا ہوتا ہوا نظر نہیں آتا, اس کو کوئی سپورٹ کرتا ہوا جو ہے نظر نہیں آتا, چند ایکٹیوسٹ اور چند ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ کے علاوہ. یہ بہت ضروری ہے اس بات کو تسلیم کرنا کہ اگر آپریشن دنیا کے کسی بھی خطے میں ہو رہا ہے تو اس کے لیے آپ کسی رنگ, نسل, ذات پات کو دیکھتے ہوئے سپورٹ یا اس کے لیے کھڑے نہ ہوں, بلکہ آپریشن جہاں بھی ہو اس کے خلاف کھڑا ہونا یہ ہر انسان کا ذمہ ہے, یہ ہر مذہب کا ذمہ ہے. انہی باتوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے آج جو ہے ہم اپنے اس ویبینار کا جو ہے آغاز کر رہے ہیں. تو سب سے پہلے اس ویبینار کا آغاز کرنے سے پہلے ہم جو ہے آپ تمام کو اپنے گیسٹ سے بھی جو ہے متعارف کروانا چاہیں گے. تو آج ہمارا ساتھ دیں گے ہز ایکسیلنسی ابو الفضل محمد علی خانی صاحب, جو کہ کاؤنسل جنرل آف دی اسلامک ریپبلک آف ایران ممبئی سے جن کا تعلق ہے. اس کے بعد ہمارا ساتھ دیں گے حجت الاسلام مولانا اسلم رضوی صاحب, جو کہ چیف آف شیعہ علماء بورڈ مہاراشٹر سے جن کا تعلق ہے. جس کے بعد ہمارا ساتھ دیں گے ڈاکٹر سنیل, جو کہ ایکس MLA آف مدھیہ پردیش ہیں, سوشل ایکٹیوسٹ ہیں, رائٹر ہیں, ممبر آف آل انڈین کسان سنگھرش کوآرڈینیشن کمیٹی سے جن کا تعلق ہے. ان کے ساتھ ہمارا ساتھ دے رہے ہیں مفتی منظور ضیائی صاحب, جو کہ ٹرسٹی ہیں الجامعۃ الزہرا ایجوکیشنل ٹرسٹ کے, پریزیڈنٹ ہیں دارالعلوم فیضان رضا کے, ڈائریکٹر ہیں انڈین علماء بورڈ کے. اسی کے ساتھ ہمارا ساتھ دے رہے ہیں حجت الاسلام مولانا فیاض باقر صاحب, جو کہ جنرل سیکریٹری آف مجتمع علماء و خطبہ شیعہ مہاراشٹر اسٹیٹ سے جو ان کا تعلق ہے. ساتھ ہی ہمارا ساتھ دیں گے مسٹر فیروز میٹھی بورڈ والا, جو کہ نیشنل جنرل سیکریٹری انڈیا پیلسٹائن اینڈ سولیڈیرٹی فورم سے جن کا تعلق ہے, پیلسٹائن سولیڈیرٹی فورم کے. اینڈ آف کورس آخر میں ہمارے ووٹ آف تھینکس اور اسپیچ ہوگی جناب محسن عاشوری صاحب کی, جو کہ ڈائریکٹر آف ایران کلچر. بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبده لیلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه
هو السميع البصير. जी हाँ नाज़रीन, जैसे कि हम सब जानते हैं कि मुसलमानों का क़िब्ले अव्वल कहलाने वाला जेरूसलम या मस्जिद अल-अक़सा हम जो कह लें, इसके यहाँ पर इसकी तहफ़्फ़ुज़ी के लिए, इसकी हिफ़ाज़त के लिए जितने ज़्यादा परेशान और कोशा नज़र आते हैं फ़िलिस्तीनी मुसलमान, और जिनके ऊपर ऑपरेशन की जो एक सदियाँ जो कायम हो गई हैं, यहाँ पर रहने वाले इसराइलियों ने जो इन पर जबरन कर दिया है, इस पे एक ये भी आलमिया देखा जाता है कि इन फ़िलिस्तीनी मुसलमानों का बजाय साथ देने के, हम देखते हैं कि कई ऐसे मुस्लिम ममालिक हैं जो कि इसराइल का साथ दे रहे हैं, उससे दोस्ती में जो है सबकत लेते जा रहे हैं। आखिर इस तरीके के इक़दामात से क्या होगा और फ़िलिस्तीन में फ़िलहाल किस तरीके के हालात हैं, ये तमाम से रिलेटेड जो है हमारे पास एक शॉर्ट क्लिप भी है, जो कि हम इंशाअल्लाह आप तमाम के साथ शेयर करना चाहेंगे। Was Palestine an uninhabited land? If a nation inhabits and develops a once infertile desert, would you call it an occupier? 200 years ago, Palestine had turned into a dry and dreadful desert. It was like a remote island separated from the rest of the world and was slipping into oblivion. Thank God the Zionists stepped in and non-indigenous Arab farmers prospered. This is the exact image that the Israeli Foreign Ministry's website, Israeli textbooks and media outlets are trying to portray. An image that's devoid of any reality. Then what is the reality? Historical accounts show that not only had Palestine not been a remote and closed island, but it was open to modernization. Zahir al-Amar, who was the Muslim ruler of Palestine in the 18th century, made all his effort to renovate and modernize cities such as Haifa, Tabariya, and Akka. The coastal cities and ports prospered as a result of trade with Europe. Statistics show that the agricultural industry of that era was sufficient to meet the needs of its 500,000 inhabitants. Palestine was not an uninhabited land, but it was a rich and fertile piece of East Mediterranean, which was poised to enter the 20th century as a modern society, a trend that was disrupted by the Zionist movement and the resulting occupation. Is Zionism the same as Judaism? Every religion has some ordinary followers and some hardcore followers. Many believe Zionists are the same as those die-hard Jews who truly believe in their religion and stand for their beliefs whatsoever. But what is the reality? Judaism is more than 3 millennia old. But the Zionist ideology is rooted in a 19th century political movement which was named after a mountain called Zion. Mount Zion is located in southwest of Jerusalem al-Quds and is home to King David's tomb. The Zionist vision is not based on religious beliefs, but is entirely secular. In 1895, a journalist and political activist by the name of Theodor Herzl wrote a book titled The Jewish State and proposed the idea of establishing a country for the Jewish community, with non-believer Jews also included. 2 years later, he organized the first International Congress on Zionism with the assistance of Western colonial powers to implement his plan regarding moving the Jews from all parts of the world into a single land. Herzl had considered other alternatives than Palestine to create a Jewish state, such as Uganda, parts of North America, and Azerbaijan. Herzl didn't live to see his dream come true as he died in 1904. But years later, Zionist groups at the United Nations passed a resolution on the partition plan for Palestine.
The Israeli attacks on Palestinians are an instance of self-defense against terrorism. You might have heard the famous phrase, an eye for an eye, a saying that gives the green light to retaliation. But a quick glance into the death toll in the Gaza Strip would reveal appalling facts. Statistics show that what has frequently happened in Gaza amounts to a genocide rather than an equal reprisal. In the summer of 2005, Israel was forced to withdraw from the Gaza Strip. At the same time, it embarked on mass arrests of activists from the Islamic Jihad and killed some of the residents of Tulkarm. In return, the Islamic Jihad organization fired 9 rockets into Israeli cities, which did not result in any casualties. But what was Israel's response? It flew its warplanes over Gaza to intimidate the civilians. Tel Aviv then launched heavy artillery and airstrikes, which led to a disaster in the densely populated Gaza region. Only in 2006, Israel's human rights organization known as B'Tselem reported that Israeli troops killed 660 Palestinian citizens. In the winter of 2008, Israel killed more than 100 people in Gaza, only in 2 days. This awakened the passive international community to the gravity of the crimes and forced Israel into a ceasefire which was soon violated by Israel for baseless reasons, and the world was sitting back and watching the growing scale of the slaughter. Okay, with this, we are going to open our panel of discussion, and first up we have His Excellency Abul Fazl Muhammad Ali Khani's message. और इस मैसेज को हमें बताया गया है कि His Excellency Abul Fazl Muhammad Ali Khani जो हैं अलालत की वजह से he cannot be part of this webinar. So the Vice Counsel Mr. Mufidi Far ये जो है इनका मैसेज हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे इस टॉपिक से मुतालिक. So can we have Mr. Mufidi Far? Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Walaikum assalam. Well, thank you so much. Good to be here. Thank you so much for your invitation, and thank you, organizer. Unfortunately, His Excellency Mr. Ali Khani have had a little sickness, and I have an honor to make a speech for you about International Al-Quds Day. بسم الله الرحمن الرحيم. فنريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. But we wanted to be gracious to those based in the land and to make them leaders and inheritors. Salam and greeting to attendees and a respected organizer. At the outset, I extend my congratulations and good wishes on the advent of the holy month of Ramadan to all Muslims, particularly to brothers and sisters in friendly and brotherly country of India. Also, I would like to congratulate the last Friday of the holy month of Ramadan, which have been designated by the founder of Islamic Republic of Iran and Islamic Imam Khomeini, rahmatullah alayh, as the International Day of Al-Quds and the symbol of fight against tyranny, injustice, and apartheid. We commemorate the remembrance of all martyrs who laid their lives in defending the reality of freedom and resistance, especially the Palestinians, children buried under the rubble of homes destroyed by the occupied Zionist fighter jets. Without doubt, when Imam Khomeini rahmatullah alayh launched a global movement for uniting various Islamic sects as well as non-Muslim movement with this historic announcement, many had no faith and relief that soon this pervasive movement would draw support of oppressed Palestinians from countries, government, and different people of the world. With the passage of time, despite the intensification of brutal acts and attacks against child-killing Zionist regime, today we are witnessing the Palestinians and the resistance from standing up against them.
Testimony of this claim is repeated defeats of Zionists in Gaza and other occupied territories in spite of full support of America, some Western countries, and unfortunately, a few territories and submissive head of Islamic countries with 11 days, 22 days, and 33 days war as the obvious case in this point. On the other hand, every day the resistance front and brave Palestinian youth have achieved more victories than before in all arenas from electric and cyber warfare, nullifying the so-called Iron Dome of Tel Aviv. As the supreme leader of Islamic revolution, Hazrat Ayatollah Imam Khamenei has several times explicitly said that Islamic Republic of Iran recognizes its revolutionary Islamic and global obligation to defend oppressed and the poor. This happens so while the Islamic Republic of Iran itself make all its efforts stand with deprived and oppressed people of Syria, Iraq, Palestine, Yemen, Afghanistan, and defeats in the enemies. Today, if we are witnessing the Zionist occupied, the regime tries to have direct and indirect malicious persons surrounding the border of Islamic Republic of Iran with the unfortunate help of some neighboring Muslim countries who ought to define and follow up the general security of regional borders, instead are shamelessly refraining from slogan of support for Palestinian people, which till recent year they were crying for and are now seeking to help occupy the regime in conducting terrorist operation inside Iran. Simply shows the fact that this hapless and wretched enemy, we would invoke any object act. Today, we see that all the freedom-loving Muslim, Christian, and even Jews in every part of the world are united in International Al-Quds Day and continuously demand the realization of the right of Palestinians. If we see today that the barbaric Zionist policy is attacking the worshippers in this holy month of Ramadan and enduring the fasting Muslim, and on top of that, this act are justified by the Zionists and Western media, it is due to the fact that social, intellectual maturity and national aspiration of Palestinian period is stronger than ever before the status, which leave the Zionist occupier with no other option but to use force and show brutality. But the most important point is the ever-increasing material and moral support of countries and people, which inshallah very soon lay the basis for the final victory of good every will. In the end, I apologize for not having the opportunity to personally attend this very constructive event due to severe illness, and I thank you. I thank Dr. Ashuri and all other contributors of this seminar. Thank you so much. I am in this webinar, yes. I am sure the opinions and concerns presented by the respected panelists will pave the path for contribution of a struggle of rights-seeking and great national of Palestine. For covenant meeting, they shall be on Friday at various gathering for this aspiration, with the hope of ever-increasing success for each and every one of your dear friends. Wassalamu ala man ittaba al-huda. Thank you so much for hearing my speech. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. And we surely pray for your soon recovery, Mr. Abul Fazl Muhammad Ali Khani Sahab. And with that, we would like to have your remarks, Sir Mohsin Ashuri. Assalamu alaikum, sir. Assalamu alaikum wa rahmatullah. I should say to all of participants and all the speakers to thank you so much to accept our invitation to this
webinar they came, and also we would like to be useful for all of audience. I Inshallah. hope all people, all audience will be enjoy from this webinar, inshallah. Thank you so much. ओके सो इसी के साथ जो है हम अपने अगले गेस्ट को जो है दावत देना चाहते हैं। हमारे अगले गेस्ट हैं हुज्जतुल इस्लाम मौलाना असलम रिजवी साहब, जो कि चीफ ऑफ शिया उलेमा बोर्ड के चीफ हैं और महाराष्ट्र से जिनका ताल्लुक है। सो कैन वी हैव हुज्जतुल इस्लाम मौलाना असलम रिजवी साहब? अस्सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दु लिल्लाहि वस्सलातु अला अहलिहा। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु तबारक व तआला व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअनफुसिहिम। सबसे पहले तो मैं ये ज़रूरी समझता हूँ कि बिरादर गिरामी आली जनाब इज़्ज़त माब मोहसिन आशूरी, रईस खाने फ़रहंग जमहूरियत इस्लामिया ईरान मुंबई का दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करूं कि उन्होंने ये अपॉर्चुनिटी, ये मौका और ये सआदत, ये शरफ इस फ़कीर को इनायत फरमाया कि आज इस अहम और निहायत ही अहम टॉपिक पर हम लोग अपने नज़रियात पेश करें। हम सब जानते हैं कि 1948 में इजराइल नाम का कोई मुल्क नहीं था। 1948 के बाद नक्शे पर जालिमाना Abba, can you please fix your audio? Yes. जैसे जैसे जमाना गुजरता गया, जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, नक्शे में इजराइल का एरिया भी गस्ब करके बढ़ता गया। और ये इसलिए हुआ कि जो लोग ह्यूमन राइट्स की बातें किया करते हैं वो खामोशी नहीं थे, बल्कि वो इजराइल को वो मुकम्मल सपोर्ट कर रहे थे। याद रखिए, इजराइल का मसला एक इस्लामिक मसला नहीं है, बल्कि एक इंसानी मसला है। और हर धर्म, हर मजहब ये कहता है कि मजलूमों की हिमायत करना चाहिए, मजलूमों का साथ देना चाहिए। हम अगर हिंदू हैं, हम अगर मुसलमान हैं, हम अगर क्रिश्चियन हैं, हम अगर किसी भी धर्म से हमारा ताल्लुक है, तो हर मजहब बेबांग दुहल हमसे ये मुतालबा करता है, डिमांड करता है कि तुम्हारा धर्म कुछ भी हो, तुम्हारा मजहब कुछ भी हो, लेकिन तुम्हें मजलूमों का साथ देना है। जिन पर अत्याचार किया जा रहा है, जिन पर जुल्म किया जा रहा है, जिनका घर उजाड़ा जा रहा है, जिन्हें घर से निकाला जा रहा है, उन्हें साथ देने के लिए हर धर्म आवाज दे रहा है। लेकिन कितने हैं धार्मिक और कितने हैं आजादी ख्वाह और कितने हैं ह्यूमन राइट्स की आवाज बुलंद करने वाले जो आज फिलिस्तीनी मजलूमों का साथ दे रहे हैं। जो कुछ रशिया के मुकाबले में यूक्रेन में जो जंग हो रही है, वो जो कुछ भी जहां वहां जो जुल्म हो रहा है, उस जुल्म की हम मजम्मत करते हैं। अगर किसी का खून बहाया जा रहा है तो हम उसकी मजम्मत करते हैं। लेकिन एक सवाल मेरा ये है कि क्या यूक्रेन के लोगों का खून है
اور جو فلسطین کے مسلمانوں کی رگوں سے جاری ہو رہا ہے کیا وہ خون نہیں ہے؟ خون تو سب کا خون برابر ہے، کسی کا خون سفید، ہرا اور نیلا نہیں ہوتا، ہر انسان کا خون لال ہے۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ فلسطینیوں کے جسم سے نکلے ہوئے خون پر دنیا آواز کیوں نہیں بلند کر رہی ہے، اور یوکرین کے لوگوں کے جسم سے نکلے ہوئے خون پر اتنا واویلا مچایا جا رہا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دوغلی پالیسی دنیا اختیار کر رہی ہے، ان کا ڈبل اسٹینڈرڈ ہے، فلسطینیوں کے ساتھ کوئی اور برتاؤ ہو رہا ہے اور یوکرین کے لوگوں کے ساتھ کوئی اور برتاؤ ہو رہا ہے۔ ہونا ہی تو یہ چاہیے تھا کہ جہاں بھی کسی انسان کا خون بہایا جائے، اگر ہم میں انسانیت پائی جا رہی ہے تو ہمیں آواز بلند کرنا چاہیے۔ آپ جانتے ہیں آیت اللہ امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے جب ساؤتھ لبنان پر اٹیک ہوا تھا اسرائیل کا، انقلاب اسلامی کی کامیابی کے فوراً بعد امام خمینی نے یہ پیغام دیا تھا اور یوم قدس کی بنیاد ڈالی تھی۔ اس وقت سے لے کر آج تک احتجاج کا، اعتراض کا، آواز بلند کرنے کا پوری دنیا میں یہ سلسلہ جاری ہے۔ آیت اللہ خامنائی حفظہ اللہ تعالی نے کیا خوبصورت بات کہی تھی کہ یہ چاہتا ہے اسرائیل کہ یوم قدس کی جو آواز ہے اس کو دبا دیا جائے، لیکن میں یہ اعلان کر رہا ہوں کہ سب کچھ تو ہو سکتا ہے دب جائے، لیکن مظلوموں کی حمایت میں جو ہماری آواز ہے وہ کبھی بھی دب نہیں سکتی ہے۔ یہ آواز باقی رہے گی، یہ آواز جاری رہے گی۔ رزلٹ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، لیکن ایکشن تو ہمارے ہاتھ میں ہے، عمل تو ہم کر سکتے ہیں، اور کوئی بھی رزلٹ کے لیے کام نہ کرے۔ ہمارا جو نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم مظلوموں کی حمایت کریں گے، ہو سکتا ہے کبھی کامیاب ہو سکتا ہے کامیاب نہ ہو، اور اگر کامیاب نہیں ہو رہے ہیں تو ہمیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے یوم قدس ابھی 2 دن کے بعد یہ سلسلہ شروع ہوگا۔ آپ دیکھیں گے پوری دنیا میں لوگ روزہ رکھ کر شدید گرمی میں، دھوپ میں، کروڑوں کی تعداد میں فلسطینی مظلوموں کی حمایت میں سڑکوں پر نکل کر یہ بتائیں گے کہ یورپ والوں، امریکہ والوں، انسانیت ابھی ختم نہیں ہوئی ہے، آج بھی انسانیت باقی ہے۔ دیکھو ہم بھوکے بھی ہیں، ہم پیاسے بھی ہیں، لیکن اس بھوک اور پیاس کے ساتھ اسرائیل کے خلاف آواز دے کر یہ بتا رہے ہیں کہ ہم مظلوموں کے ساتھ ہیں، ظالموں کے خلاف ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تھینک یو سو مچ آغا، تھینک یو سو مچ۔ ناظرین آپ تمام جو ہے مناظرہ کر رہے تھے، ملاحظہ کر رہے تھے حجت الاسلام مولانا اسلم رضوی صاحب کا، اور ان کی الحمدللہ بہترین اسپیچ سے ہم اور آپ نے جو ہے ہم مستفیض ہوئے۔ اسی کے ساتھ ہم آغا محسن عاشوری صاحب آپ سے ریمارکس لینا چاہیں گے آغا اسلم رضوی صاحب کے لیے۔ Thank you so much, Maulana Aslam Rizvi, my best friend also. And as he mentioned about the Imam Khomeini, about his idea about the Israel and QUDS Day, established the QUDS Day also during the last Friday after Ramadan holy months. So during this time, we can see what happened from when the QUDS Day they announced about the QUDS Day until now. Alhamdulillah, most of Muslim, most countries, most people, they knows who the crimes of the Zionists during these years, and also Supreme Leader Ayatollah Khamenei also mentioned about this idea.
as during this, especially this year, as Maulana mentioned about the crimes of the Israel and the occupied the land of the Palestinian also, the crimes decrease, but the reaction of the people, the reaction of the countries, the reaction of the oppressed people, they know who has the rights and the human rights, what happened for the around the world, and the crimes about the children also, what happened. They kill children very, very easily, and they don't afraid nothing. But now they afraid. They don't have the, what happened, the Iron Dome. Before that, they says, okay, we have the Iron Dome, nobody can attack to us. But now we see the Palestinian people attack to them very easily. They have they send rocket to them. Also, they buy the stone. The young generation attack to the Palestinian, attack to the Zionists by stones. We know they will be victor. The Palestinian will be victor. They will win, and inshallah, very soon, very soon, we can see the Zionist regime will be collapsed very soon, inshallah. Thank you so much, Maulana Aslam Rizvi, for your speech, the best speech. Thank you so much. That was very beautiful and nice. God bless you, inshallah. Thank you. Thank you. Thank you so much. And with this, we would like to invite Dr. Sunilam, who is the ex-MLA of Madhya Pradesh, social activist, writer, member of All India Kisan Sangharsh Coordination Committee. So can we have Dr. Sunilam? Good evening, sir. जी बहुत बहुत शुक्रिया बहन आपका। मैं सभी हजरात को, सभी को बहुत बहुत मैं रमज़ान के पवित्र महीने की मुबारकबाद पेश करता हूँ। किसान संगठनों की ओर से, देश के जन संगठनों की ओर से और समाजवादी संगठनों की ओर से। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है जब हम जो इंटरनेशनल कुड्स डे है उसको लेकर के चर्चा कर रहे हैं, जो कि 29 अप्रैल को पूरी दुनिया के अंदर मनाया जाएगा। मैं मानता हूं कि भारत के अंदर भी तमाम सारी जगहों पर इस तरीके के जलसे आयोजित करने की खबरें, सूचना हमको हैं। मुंबई के अंदर भी इस तरीके का जो है जलसा होने वाला है। फिरोज मीठी गुरवाला जी ने उस तरीके का सूचना दी है। अलीगढ़ से भी, हैदराबाद से भी, तमाम सारी जगहों से हमारे साथियों ने हमें बताया है कि इसकी एक तैयारी है, क्योंकि ये मसला जैसा कि अभी कहा गया असलम साहब, रिजवी साहब के द्वारा कि ये किसी एक मजहब के साथ में, किसी एक देश के साथ में जुड़ा हुआ मसला नहीं है, ये इंसानियत के साथ में जुड़ा हुआ मसला है। और फिलिस्तीन का मसला मैं आपको ये बता दूं कि मैं जब इंटरनेशनल यूनियन ऑफ सोशलिस्ट यूथ के अंदर रहा, 120 देशों का वो संगठन था युवाओं का, तब फिलिस्तीन के सवाल को लेकर के हम लोगों ने दुनिया भर में तमाम सारे प्रयास हम लोगों ने किए। और उस समय तमाम सारी जो मीटिंग्स हैं फिलिस्तीन के अंदर जाकर के भी हम लोगों ने लगातार मीटिंग्स की। तो लगातार हम फिलिस्तीन के जो यूथ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अल-फतह और तमाम सारे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके साथ में हम लगातार संपर्क में रहे हैं। मैं एक तो इस बात के लिए मैं बधाई देना चाहता हूं कि यहाँ पर जो ईरान के एम्बेसी के जो कल्चरल जो डिपार्टमेंट है उसने इस तरीके का आयोजन किया। पिछली बार भी याद किया था, लेकिन पिछली बार की बात तो एकदम इस तरीके की थी कि वहाँ पर कोरोना चल रहा था, लेकिन आज इंशाल्लाह हम उससे कुछ उबर पाए हैं और उम्मीद करते हैं कोई थर्ड फोर्थ कोई ऐसा वेव फिर से नहीं आएगी। और हम लोग जो है इस बार, जैसा मैं पढ़ रहा था, मुझे बहुत रोमांचित लगा कि ईरान अकेले में 900 शहरों के अंदर इस तरीके का फिलिस्तीन के समर्थन में, फ्रीडम ऑफ फिलिस्तीन को लेकर के, फिलिस्तीन की आज़ादी को लेकर के और अलस्कमास की आज़ादी को लेकर के, उसका लिबरेशन को लेकर के वहाँ पर बड़े बड़े जलसे जुलूस होंगे। हम अपने आप को उसकी भावना के साथ में हम जोड़ने का काम करना चाहते हैं। और हम ये कहना चाहते हैं कि जो लोग
दबाना चाह रहे हैं, जो लोगों को लगता है कि वो अपने हथियारों से वो लोगों की भावनाओं को कुचल सकते हैं, लोगों के जो अधिकार हैं, जैसा कि अभी बताया गया था और सभी ये सब विदित है कि इजराइल जो है वो नक्शे पर ही नहीं था दुनिया का, लेकिन उसका एक नक्शा बना दिया गया साम्राज्यवादी ताकतों के द्वारा, ज़ायनिस्ट ताकतों के द्वारा। और वो आज अगर उन्हें लगता है कि हम अपनी ताकत की दम पर फिलिस्तीनियों को हम लगातार दबा करके रख सकते हैं, उनके अधिकारों से उन्हें वंचित रख सकते हैं, या एक इंडिपेंडेंट फिलिस्तीन बनने से हम रोक सकते हैं, तो वो गलत फहमी में है। दुनिया के अंदर जो सबसे ताकतवर और सबसे क्रूर जो व्यक्ति माना गया वो हिटलर माना गया, वो मुसोलिनी माना गया, लेकिन हम सब जानते हैं कि उनका अंत किस तरीके से हुआ। तो जो बहुत बड़े क्रूर शासक हुए, उनका जिस तरीके से अंत हुआ है, उसी तरीके से ये रिजीम भी और इनकी जो ताकत है उसका अंत होगा। मैं आपको एक जरूर कह दूं कि जो कोशिश अभी चल रही है अलस्क मॉस्क के अंदर जिस तरीके से घुसने की, कब्जा करने की, या ये कहा जाए कि मुस्लिम के जो वर्शिप प्लेसेस हैं उसके ऊपर जो कब्जा करने की जो कोशिश चल रही है, चाहे जेरूसलम में हो, चाहे हेब्रोन में हो, चाहे नेबुलस के अंदर हो, इस सभी की हम निंदा करते हैं। इस तरीके के प्रयास गलत हैं, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो। भारत के अंदर भी जब इस तरीके का प्रयास कोई किया जाता है या किया जाता रहा है, क्योंकि हम लोग तो ऑफिशियली इस बात को कहते रहे हैं, तो हमारे लिए कोई ऐसा मसला नहीं है। जो लोग केवल एक फिर से इतिहास लिखना चाहते हैं और उनको लगता है कि वो अपनी ताकत से इतिहास लिख सकते हैं, और जो दूसरे मजहबों की जो इबादत की जगह हैं उनके ऊपर कब्जा कर सकते हैं, वो लोग गलत फहमी में हैं। उन लोगों का पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो सेकुलर ताकतें हैं, जो भारत के संविधान को मानने वाली ताकतें हैं, वो लगातार उनका विरोध करती रही हैं। तो जिस तरीके से हम अपने देश के अंदर जिस तरीके से विरोध करते हैं, वैसा ही विरोध हम जेरूसलम के अंदर भी हम करते हैं कि वहां पर भी किसी तरीके से ताकत की दम पर जो है वहां पर उसको डिस्टर्ब करने का सवाल। अभी हमने देखा कि 15 अप्रैल के बाद में जो वहां पर हिंसा हुई, 170 लोग उसके अंदर घायल हुए, मार्च के अंदर 34 लोगों की जो फिलिस्तीनियों की जो मौत हुई है, शहादत हुई है। मुझे लगता है कि वो शहादत बेकार नहीं जाएगी, शहादत कभी भी बेकार नहीं जाती, ये हमें इतिहास बताता है। और मैं फिर से एक बार इंटरनेशनल क्विड्स डे के ऊपर जो सब लोग इस एकजुटता के साथ हैं, मैं उन सबको शुभकामनाएं देता हूं, और अपनी ओर से एकजुटता किसानों की ओर से, जनसंगठनों की ओर से, समाजवादियों की ओर से मैं एकजुटता प्रदर्शित करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। डॉक्टर सुनीलम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ जो है हम आगा मोहसिन आशुरी आपसे जानना चाहेंगे योर रिमार्क्स फॉर डॉक्टर सुनीलम, जिन्होंने इतनी बेहतरीन तरीके से मजलूमों का साथ देते हुए जो जालिम है उनके खिलाफ जो है अपना क़याम बताया है। व्हाट विल बी योर रिमार्क्स सर? सर, अनम्यूट योरसेल्फ। Okay, thank you so much, Dr. Sunilam. That was very good, and when you mentioned about the goal idea about the QUDS Day, International QUDS Day, and the Zionism regime, the rule of the Zionism regime during these times. Yes, that is a very, you mentioned about the important points about the humankind, about the men. This is very important for everybody. No difference between the Muslim and the Christian, nothing else. We should respect to the human rights. We should respect to the Palestinian people, even maybe they are the Christian or the Muslim or the other, or Jewish also maybe. As we see in US, there is some Jewish people, they are against of the Zionist regime. And so we believe that this important point is very, we should respect to this idea and know the
Palestine, the problem of the Palestine, return back to everybody in the global, not only the Muslim, not only the Christian or Jewish or Hindu, also like all people, they should support the Palestinian people, and the reaction of them is very important, especially in UN. We can see most countries, they are against the Zionism, especially the revolutionary countries and the people who are support the oppressed people. Okay, that was very nice and very beautiful idea about how it's possible to support the Palestine. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. और इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने अगले गेस्ट को दावत देने के लिए। हम मदू करना चाहेंगे मुफ्ती मंजूर ज़ियाई साहब को, जो कि ट्रस्टी हैं अल जामतुज़ ज़ोहरा एजुकेशनल ट्रस्ट के, प्रेसिडेंट हैं दारुल उलूम फैज़ान रज़ा के, डायरेक्टर हैं इंडियन उलेमा बोर्ड के। So can we have Mufti Manzoor Ziyai Sahab? Salamun alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. तमाम नाजरीन और हाजरीन जो दुनिया जहान से आपको सुनते और देखते हैं, जिस प्रोग्राम का इनकाद आपने किया है ये बहुत ही अहम और काबिल मुबारकबाद हैं। खुसूसी मुबारकबादियाँ जनाब मोहसिन आशूरी साहब और उनकी पूरी टीम को, जिनकी जिद्दोजहद से पूरी दुनिया को अमन और शांति का गहवारा बनाने और हक और इंसाफ की खातिर आवाज़ बुलंद करने की जो तरगीब आपने दिलाई है, ये काबिल मुबारकबाद है। ये वो चंद जुमले थे जो मैंने अपने तरफ से बयां किया। मैं दुआ गो हूँ कि परवरदिगार आलम हम लोगों को इंसाफ और मजलूम के साथ खड़े होने वाला बनाए, और बहन शाइस्ता को भी, जिनके तवस्सुल से इतना खूबसूरत तरीके से स्मूथली प्रोग्राम आगे बढ़ता है, आप भी काबिल मुबारकबाद हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आज की गुफ्तगू का आगाज हम अल्लाह के कलाम से करना चाहते हैं। दुआ गो हैं कि परवरदिगार आलम हमारे जुमलों को कबूल फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। क़द क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला यनालु अहदिज़ ज़ालिमीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन। आज से बरसों कबल 1979 में जिस यौमुल क़ुद्स की बुनियाद रखी थी हमारे बुजुर्गों ने, हमारे इमामों ने, और खुसूसन उस रूह रवा ने जिस चीज़ की कमी को महसूस किया था, उसे मैं अपने अशार की ज़बानी आप तक पहुँचाना चाहूँगा। उम्मीद करता हूँ कि फिरोज़ भाई और तमाम जिम्मेदारान इस पर खुसूसी तवज्जो ज़रूर देंगे। उन्होंने असल में ये बात बताना चाहा था दुनिया को कि बेगुनाहों तो होने से कुछ नहीं होगा। असल में हजरत रूहुल आयतुल्लाह ख़ामेनी साहब का जो पैगाम था इमाम साहब का और हमारे बुजुर्ग का, वो ये था कि बेगुनाह होने से कुछ नहीं होगा, सबूत दीजिए रोने से कुछ नहीं होगा। सुभान अल्लाह। सबूत दीजिए रोने से कुछ नहीं होगा। जब दुनिया जुल्म और जालिम ने अपने पुष्ट पनाही में बड़े बड़े जालिमों को खड़ा करके रखा था, उस वक्त ये आवाज लगाना ये मर्द हक की बात है, और उस मर्द हक ने पूरी दुनिया के उम्मत को और उम्मत मुस्लिमा को इस दरवाजे पर लाकर खड़ा कर दिया। और मैं ये समझता हूँ कि सिर्फ उम्मत मुस्लिमा ही नहीं बल्कि इंसाफ पसंद हर एक शख्स को, मजलूम का साथ देने वाले हर साथी को इस मकाम पर लाकर खड़ा कर दिया है कि रोने से कुछ नहीं होगा, सबूत दीजिए और साबित करना पड़ेगा कि आप मजलूम हैं, और इस मजलूमी को दुनिया के सामने पेश करके बताइए, और रोने से कुछ नहीं होगा, और साबित करना पड़ेगा कि जालिमों का ठिकाना जहन्नम की दहकती हुई आग है और अंगारे हैं। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में इरशाद फरमाया है कि मेरा अहद, मेरा वादा जालिमों के लिए नहीं होता। मैंने जो तुमसे वादे किए हैं, अगर तुम जालिम हो तो मैं अपने वादे से फिरता हूँ और जालिमों को उसके अंजाम तक पहुंचाता हूँ। फिलिस्तीन की जमीन, वहां के बच्चे, वहां के लोग कराह रहे हैं, बच्चे सिसक रहे हैं, औरतें बिलक रही हैं, जिनके जवान बेटे इस दुनिया से जा रहे हैं इस्लाम की बका के खातिर, दीन की बका के खातिर, इंसाफ की बका के खातिर, जिनका घर लूटा गया, जिनका परिवार खत्म कर दिया गया,
जिनके बच्चों को मार दिया गया। ये जालिम दुनिया ये देखती रहती है, दुनिया में कहीं जुल्म होता है तो बहुत सारे ह्यूमन राइट्स वाले तैयार हो जाते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन जब हमारी माएं बिलकती हैं तो उनके आंसुओं को पोंछने वाला कोई नहीं दिखता। जब हमारे बच्चे शहीद होते हैं तो उन बच्चों के सरों पर, उनके माओं पर, उनके बहनों के सरों पर हाथ रखने वाला दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं देता। जब हमारे जवान वहां मारे जाते हैं तो कोई ये नहीं कहता है कि यहाँ पर इंसाफ का जुल्म हो रहा है, इंसाफ के साथ नाइंसाफी हो रही है, जालिम मजलूमों के साथ इंतहाई दरीग लहजे का और बहुत ही निचले तबके का जुल्म कर रहे हैं। ऐसा जुल्म जमीन ने देखा नहीं, ऐसा जुल्म लोगों ने बर्दाश्त नहीं किया होगा जो फिलिस्तीन की आवाम ने, वहां के बच्चों ने, वहां के बूढ़ों ने, वहां के जवानों ने, वहां की माओं ने, वहां की बहनों ने, इज्जत और आबरू जिनकी छीनी जा रही है, लेकिन सब कुछ बर्दाश्त किया। और बर्दाश्त क्यों किया, वो बात अपने अशार की जबानी मैं जरूर पेश करना चाहूंगा। एक बार और भी बतहा से फिलिस्तीन में आ, एक बार और भी बतहा से फिलिस्तीन में आ, रास्ता देखती है मस्जिद अक्सा तेरा। तो मस्जिद अक्सा पुकार पुकार कर दुनिया को कहती है कि ए मुझ तक सजदा करने वाले, ए मेरी तरफ रुख करके नमाज पढ़ने वाले, कहां चले गए हो? कहा तुमने मुझे भुला दिया है कि मेरे पत्थर, मेरे मस्जिद की दीवार, दरो दीवार, वहां के मिंबर और मेहराब तुम्हें पुकार पुकार कर कहते हैं कि तुम दुनिया के ऐश और इशरत में कदे में पड़े हो, तुम्हारे पास दुनिया की सारी खूबियां हैं, तुम्हारे पास दुनिया का आज माल है, तुम्हारे पास आज दौलतें हैं। वो दौलतें किस काम की जब तुम्हारी इबादत गाहें तुमसे छीनी जा रही, जब तुम्हारे नरम नरम गद्दे और बिस्तर किस काम के, जब तुम्हारी मस्जिदें तुमसे छीनी जाती है और अपने गद्दों में, अपने एसीओ में बैठकर तुम आराम करते हो। दुनिया को ये मैसेज दिया है आयतुल्लाह खमैनी साहब ने और बताया है कि ए लोगों, एक हो जाओ, मुत्तहिद हो जाओ, इंसाफ के लिए दुनिया से लड़ने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि हमारे दीन की पहचान है मस्जिद अक्सा, हमारे दीन की पहचान है मस्जिद अक्सा। बचाएंगे तेरी हम हर शान मस्जिद अक्सा, हम बचाएंगे तेरी हर आन मस्जिद अक्सा। ये पैगाम है उन मर्द मुजाहिद का, ये पैगाम है उस मर्द हक का, जिस मर्द हक की आवाज पर आज पूरी दुनिया लब्बैक कह रही है। और आज इस तरीके का प्रोग्राम दुनिया में करके ये बताना लगू जरूर है कि हम इंसाफ के खातिर, मजलूमों के खातिर, जालिमों के खिलाफ दुनिया के जिस हिस्से में आप रहेंगे वहां से खड़े होकर के दुनिया को बताएंगे मजलूम अकेला नहीं है, जालिम तुम्हारे पास दुनिया की आसाइशें हो सकती हैं, दुनिया के आलात हो सकते हैं, वसाइल हो सकते हैं, तुम्हें खत्म करने के जरिए तुम्हारे पास हो सकते हैं, लेकिन जब रब तुम्हें खत्म करेगा तो वो वादे को पूरा जरूर करेगा और जालिमों को कैफरे किरदार तक जरूर पहुंचाएगा। वो लोग जो ये समझते हैं, वो लोग जो ये सोचते हैं कि हमारे पास दुनिया की आसाइशें हैं, हम इस मुल्क को खत्म कर देंगे, लेकिन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का नारा खत्म करने वाले याद रखें कि ला इलाहा इल्लल्लाह कल भी था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की सदाएं आज भी हैं, और ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की सदाएं हर दौर में आती रहेंगी। तुम्हारी आवाजें जरूर बंद कर दी जाएंगी, लेकिन मेरे अल्लाह का नाम, मेरे रसूल का नाम, इंसाफ का नाम इस जमीन से कभी खत्म नहीं होगा। जालिम का नाम आज यजीद के तौर पर लिया जाता है, मेरे आका हुसैन मजलूम का नाम आज आका के तौर पर लिया जाता है। तो उन लोगों को इन तमाम चीजों से सबक सीखना चाहिए। तुम जुल्म करते हुए थक जाओगे, लेकिन हम तुम मजलूम अपने ऊपर पत्थर खाते हुए बर्दाश्त करते जाएंगे और न थकेंगे। कल भी पत्थर खाया था, कल भी गोलियां खाई थी, कल भी हमारे घर मुनज़्ज़िम किए गए थे, आज भी वहां किए जा रहे हैं, लेकिन कुछ मर्द मुजाहिद आज भी तैयार हैं उसकी आबियारी के लिए, आज भी कुछ मर्द मुजाहिद उनकी बाजियाबी के लिए तैयार है। मैं उन तमाम मर्द मुजाहिद को सलाम पेश करता हूं और दुआ करता हूं कि परवरदिगार आलम आपको और हम सबको इतनी ताकत दे कि हम मजलूम के खिलाफ खड़े होकर के, जालिम की कुव्वतों के खिलाफ खड़े होकर के दुनिया को बता सके कि हम अल्लाह और रसूल के सिपाही हैं, जो ईमान के साथ, इस्लाम के साथ, दीन के साथ, हक्कानियत के साथ, इंसाफ के साथ खड़े होने वाले हैं। इंशाअल्लाह तबारक व तआला कल भी खड़े हुए थे, आज भी खड़े हुए हैं और इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक खड़े रहेंगे। लेकिन जालिमों को उसके अंजाम तक पहुंचाने में जो भी करना है वो पूरा काम करेंगे, ताकि इस्लाम और इंसाफ का नाम हमेशा बुलंद रह सके। वो लोग जिन्होंने दुनिया में अपनी सल्तनतें बनाई हैं, जिन्होंने 1948 और 1947 के दरमियान में ये जिस चीज की बुनियाद डाली है, जो साल हर साल तक यहाँ वहां फिर रहे थे, उन्हें मालूम होना चाहिए कि तुम्हारे पास दुनिया की आसाइशें जरूर हो सकती हैं, टेक्नोलॉजी की ताकतें तुम्हारे साथ जरूर हो सकती हैं, तुम्हारे तोपों और तुम्हारे AK-47 का तो मुकाबला करने के लिए हमारे बच्चों के सीने सिपर हैं, हमारी बहनों ने आंचलों से तुम्हारे गोलियों का जवाब दिया है। तो याद रखना, हमारे बच्चे आज भी तैयार थे, कल भी तैयार रहेंगे इंशाअल्लाह ताला, और इंसाफ के खिलाफ
जिस तरह पूरी दुनिया में लड़ाई लड़ी जा रही है, हम लोग इंसाफ के साथ खड़े होकर, मजलूमों के साथ खड़े होकर, जालिम के खिलाफ खड़े होकर के आवाज कल भी बनाए थे, आज भी बनाए हैं, इंशाअल्लाह कल भी बनाए रहेंगे। मैं मुबारकबादियां देता हूं मोहसिन आशिर साहब को और उनकी पूरी टीम को, जिनकी जिद्दोजहद से यौमुल कुद्स मनाया जा रहा है और पूरी दुनिया तक ये पहुंचाया जा रहा है। उम्मीद करते हैं जो लोग दुनिया जहान में यौमुल कुद्स के माने को, उसके मफहूम को नहीं समझते हैं, वो जरूर समझेंगे और किबला अव्वल तुम्हें पुकारता है तो उसकी सलाहों पर लब्बैक कहते हुए जरूर हाजिरी देंगे। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि मौला मस्जिद अक्सा की हिफाजत फरमाए और उन फिलिस्तीन बच्चों, बूढ़ों और जवानों की जिंदगी को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे इंशाअल्लाह तबारक व तआला। जिस तरह कल अबाबिल के जरिया हमारे काबा को बचाया गया था, इंशाअल्लाह तबारक व तआला इन छोटी छोटी बच्चों की दुआओं के बदले में, इन माँ बहनों के टपकते हुए आंसुओं के बदले में, इन बूढ़ी औरतों के टपकते हुए आंसू जिनके बच्चे शहीद हो गए हैं, उन शहीदों के खून के कतरों के सदक़े में इंशाअल्लाह तबारक व तआला मजलूमों को इंसाफ जरूर मिलेगा। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आप तमाम मुलाहिज़ा कर रहे थे मुफ्ती मंजूर ज़ियाई साहब को, जिन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह आई एम श्योर रोज़े से रहते हुए भी इनके जो जज्बात थे, इनके जो एहसासात थे, वो कितने रोशन तरीके से और कितने ऊंचे तरीके से जो है, बीइंग अ वोकल पर्सन, ही हैज जस्ट डिलीवर्ड हिज मैसेज एंड वी आर वेरी थैंकफुल टू मुफ्ती मंजूर ज़ियाई साहब टू ऑलवेज एनकरेज अस। इसी के साथ हम चाहेंगे रिमार्क्स आगा आशूरी साहब से, आपके क्या रिमार्क्स हैं आगा? Thank you so much. Thank you. बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना मुफ्ती मंजूर ज़ियाई. That was very nice speech. Very, you encouraged all of us to against the Zionist regime more and more before that. So, as you mentioned, yes, we should support any Muslim oppressed people around the world. No difference between the Palestinian or Yemenian or Afghani or the other people. Iran believe that supporting the all Muslim people around the world. We respect to the men, we respect to the all religions, we respect to the all humankind and all human rights. So we believe that, inshallah, as you mentioned, in future, very soon, inshallah, very soon, as Supreme Leader, Iran Supreme Leader says, maybe after 25 years, the Zionist regime will be collapsed. And we pray to Allah subhanahu wa ta'ala, inshallah, that is very soon, inshallah. Thank you. Very thankful, Maulana. Thank you so much, inshallah. Thank you so much. और नाज़रीन, इसी के साथ हमारे पास और भी गेस्ट हैं जो कि इंशाल्लाह आप तमाम से अपने व्यूज और अपने मैसेजेस शेयर करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी हमारे पास शॉर्ट क्लिप है जो कि हम आप तमाम के साथ शेयर करना चाहेंगे, which is regarding Palestine. Israel is a democratic country. Israel is not an entirely Jewish country and is also home to Arab Muslims who can vote and are entitled to citizenship rights. So it's safe to say that contrary to the propaganda, Israel is a democratic country. But let's review some of its laws regarding Arab Israelis. The law of return. This law automatically allows every Jew across the world to acquire Israeli citizenship, no matter where they live. But at the same time, it remains strongly opposed to the Palestinian right of return. Interestingly, the right of return for expelled Palestinians was enshrined in Resolution 194 of the UN General Assembly in 1984. Urban service. Although Israeli Arabs are officially recognized as Israeli citizens and possess Israeli passport, they're paid less than their Jewish counterparts when it comes to municipal budget allocation. As a result, a wealthy Palestinian populated area in Israel, such as Muala village in the Galilee region, has poorer conditions than the most impoverished Jewish development towns. In 2011,
Jerusalem Post reported that between 1997 and 2009, the average income of Jews was 40 to 60% higher than that of Arab Israelis. The right to freedom of residence. Arab citizens in Israel do not have the right to reside in many of the constructed towns. This blatant violation of citizenship rights still persists in Israel, and all of the attempts made by rights organizations to end this apartheid in Israel have so far proved futile. It was Palestinians who chose to sell their lands. Did Palestinians not sell their lands? There are many historical documents that prove that the Jews purchased Palestinian lands. On the other hand, Palestinians sold their lands at high prices and had fun with their money. Now that they have run out of money, they regret selling their lands. But you should know, the entire land that was purchased under pressure and deceit from the UK government, among others, makes up less than 7% of the total land mass of Palestine, and that using deceptive measures, including 1. A seemingly legal and extravagant delegation of lands by the UK government agent when Palestine was a British colony. 2. Buying from major feudal lords who had left their lands in Palestine following the collapse of the Ottoman Empire. 3. Tempting farmers who lived under severe economic hardship by paying extravagant sums of money for their lands. Having figured out the Zionist plot, Palestinians then started to balk at selling their lands. This news was published in one of the editions of Al-Ahram newspaper in 1937. A land broker was shot dead. People were so infuriated with him that they did not allow his corpse into the mosque and did not bury him in the Muslim cemetery. In fact, 78% of the total Palestinian territory was occupied by the Zionists during the devastating war of 1948, an asymmetric war that displaced 1,200,000 Palestinians, not to mention the occupation. 531 cities and villages were razed to the ground, and thousands of Palestinians were killed. So this is the apathy of this apartheid laws, which are not only on the physical aspects, but also on financial, economical, and to the property extent aspects. We can say that. इसी के साथ जो है हम अपने अगले गेस्ट को जो है इनवाइट करना चाहेंगे, हम मदू करना चाहेंगे हुज्जतुल इस्लाम मौलाना फयाज बाकर साहब को, जो कि जनरल सेक्रेटरी ऑफ मुज्तमा उलेमा व खुतबा शिया महाराष्ट्र स्टेट से जिनका ताल्लुक है. कैन वी हैव हुज्जतुल इस्लाम मौलाना फयाज बाकर साहब? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. रब्बि अऊज़ु बिका मिन हमाज़ातिश शयातीन व अऊज़ु बिका रब्बि अन यहज़ुरून. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. अल्हम्दुलिल्लाह व सलामुन अला इबादिहिल लज़ीना इस्तफ़ा. वलअनतुद दाइमतुल बाक़ियतु अला अदाइहिम अजमईन मिनल आना इला क़ियाम यौमिद्दीन. अम्मा बाद. अल्लाह का शुक्र है कि उसने हम सबको तौफीक दी कि आज इस वेबिनार के ज़रिए हम मज़लूम की हिमायत और जालिम की मुखालफत में कुछ गुफ्तगू या कुछ बातें करने के लिए जमा हुए हैं कि जो हम सब का इंसानी फरीज़ा भी है और मजहबी फरीज़ा भी है. कुछ चीज़ें हैं कि जो हर मज़हब में कॉमन हैं, जिनमें से एक चीज़ कि जो इस टाइम बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल लेवल पे इख्तलाफी है, जिसे हम कहते हैं हिजाब. किसी न किसी शक्ल में हर मज़हब में वो चीज़ पाई जाती है. इसी तरीके से जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना, मज़लूम की हिमायत करना, ये भी हर मज़हब में किसी न किसी एतबार से कॉमन है. ज़ायोनिज़्म या यहूदी की जिनके मज़हब में बाज़ ऐसी चीज़ें पाई जाती हैं कि जिसके तहत वो दूसरे मज़हब पे जुल्म करने को सही समझते हैं, ये एक अजीब बात है. फ़िलिस्तीन जो कि फ़िलिस्तीनियों का था, है और इंशाअल्लाह रहेगा. 15 मई 1948 के दिन ब्रिटिश
या इस्तेमारी ताकत की मदद से इजराइल जैसी मुमलिकत का यहूदियों ने ऐलान किया। और ये नहीं कह सकते हम कि ये वो दिन था कि जिस दिन से फ़िलिस्तीनियों की बदबख्ती का आगाज़ हुआ, क्योंकि इसके पहले से फ़िलिस्तीनियों पे जुल्म व सितम शुरू हो गए थे, लेकिन इस दिन से इस जुल्म व सितम को बहुत से लोगों ने या बाज़ ममालिक ने एक्सेप्ट भी कर लिया था कि ये सही है। हमारा लाखों सलाम हो उस अजीम शख्सियत पे कि इमाम खुमैनी ने इजराइल के वजूद को मुसलमानों के सीने में खंजर घुपने से ताबीर किया और बिलखुसूस मुसलमानों से और बिलुमूम पूरी दुनिया से इस बात का मुतालबा किया है कि इस जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाएं ताकि दुनिया से जुल्म ख़त्म। इजराइल एक ऐसा मुल्क है कि जब तक वो बाकी रहेगा दुनिया सुकून से नहीं रह सकती। अगर आप दुनिया में होने वाली नाअमनियों को देखें, दुनिया में होने वाली प्रॉब्लम्स को देखें, मसलन बहुत सामने की चीज़ है कि जब ISIS या दाइश वजूद में आया तो पूरी दुनिया ने जो है उससे इजहार नफरत किया कि ये पूरी दुनिया को परेशान कर रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं, आतंकवाद कर रहे हैं, फलां फलां फलां। तो इनके पीछे किसका हाथ है? ISIS को इतना बजट किसने दिया? लेटेस्ट वेपन्स, हथियार उनको किसने दिए? इतनी लेटेस्ट गाड़ियां इस्तेमाल कर रहे थे, किसने दिया? और इस आला पैमाने की जंगी ट्रेनिंग, हथियार चलाने की ट्रेनिंग किसने दी? जहां दुनिया एक तरफ इस बात को मानती है कि इजराइल दुनिया की सुपर पावर ताकत है कि जो कि सिवाय झूठ के कुछ और नहीं है। अगर इजराइल वाकई इतनी बड़ी ताकत होती और ISIS से इजराइल का कोई ताल्लुक नहीं होता तो इजराइल को कहना चाहिए था कि आप परेशान ना हो, हम एक बहुत बड़ी ताकत रखते हैं, हम ISIS को ख़त्म कर देंगे। इजराइल तो यूँ भी मुसलमानों का दुश्मन था, बहुत अच्छा मौका था उसको कि वो ISIS को मार के मुसलमानों की दुश्मनी का अपना एक अरमान भी निकाल लेता। लेकिन इजराइल ने न कोई ऐसा ऐलान किया, न कोई ऐसा काम किया, जो इस बात का सबूत है कि उसके पास ताकत भी नहीं थी और उसका ISIS को सपोर्ट भी था। जिन लोगों ने ख़त्म किया ISIS को, उन्होंने इस बात का सबूत दिया कि हमारा आतंकवाद से हमेशा दुश्मनी का नाता है, हम आतंकवाद को कभी मजहब की निगाहों से नहीं देखते। तो वो एक अलग गुफ्तगू है कि हम उस तफसील में नहीं जाते हैं कि ISIS का क्या मसला है। लेकिन इजराइल एक ऐसा मुल्क है, मकसद जो कहने का है कि जब तक सफ़े हस्ती पे बाकी रहेगा उस वक्त तक दुनिया सुकून से नहीं रह सकती। बिलखुसूस चूँकि हमारे ममालिक के आसपास इजराइल का वजूद है, लिहाजा हमारे लिए वो ज़्यादा प्रॉब्लम है। इसीलिए इजराइल को कैंसर कहा गया है। कैंसर का इलाज जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा है, और कैंसर का इलाज सिर्फ इतना होता है कि जितने हिस्से में कैंसर हो उसको निकाल के बाहर कर दें, इसलिए कि वो बॉडी में रह के कभी ठीक नहीं हो सकता है सिवाय बढ़ने के। जब ये कहा गया कि इजराइल को सफ़े हस्ती से मिट जाना चाहिए तो बहुत बुरा लगा, और इजराइल के चमचों को भी बुरा लगा कि जो कि एक हक है, क्योंकि इजराइल का अपना कोई वजूद ही नहीं, अपनी कोई सरजमीन ही नहीं है, वो दूसरों पे गज़ब किए हुए बैठे हुए हैं। आज बिलफर्ज अगर आपके घर में, हमारे घर में 4 लोग आके कब्जा कर लें तो हम क्या कहेंगे? आइए सुलह कर लेते हैं, हमारे घर का एक रूम आप ले लीजिए, एक हम ले लेते हैं। ये तो अहमकाना चीज़ है। जब तक उनको घर से बाहर नहीं निकाल देंगे हम सुकून और चैन की सांस नहीं लेंगे। लेकिन इसके मुकाबले में अगर आप देखें तो गूगल ने अपने मैप से इजराइल को ख़त्म कर दिया, और एक अरसा है, कई की बात है, गूगल मैप में इजराइल नहीं है। ये उनके अपने तासुरात हैं कि जिसके ज़रिए से वो ये जाहिर करना चाहते हैं। और देखें जिस स्पीड से उन्होंने इजराइल ने फ़िलिस्तीन पर कब्ज़ा किया और आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाया है, और अब तकरीबन पूरे फ़िलिस्तीन पर कब्ज़ा किए हुए हैं। या अभी जो सेंचुरी डील का मामला पेश आया था कि सेंचुरी डील के मौके पे जिस तरीके से एक बहुत बड़ी तब्दीली का इरादा था डोनाल्ड ट्रंप, जिन्होंने बहुत अहमकाना बहुत सारे काम किए, उसमें से एक ये भी था, और बैतुल मुक़द्दस को इजराइल का पायतख्त उन्होंने मुकर्रर किया था। ये तकरीबन 16 दिसंबर 2017 को ऐलान हुआ था। ये सारी चीज़ें करके उनका मकसद यही था कि वो फ़िलिस्तीन के वजूद को ख़त्म कर दें, कि जिसकी ताबीर उस गूगल मैप में। लेकिन यकीन माने ये काम होने वाला है ही नहीं, मुमकिन ही नहीं है कि फ़िलिस्तीन का वजूद ख़त्म हो जाए। लेकिन हाँ, ये अहम काम है और ज़रूरी और होगा इंशाअल्लाह कि इजराइल का वजूद ख़त्म होगा। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, कोई जज्बाती चीज़ नहीं है, ये वो हकीकत है
جس کو ہر یہودی محسوس کر رہا ہے، اور آج یہی وجہ ہے کہ یہودی خود اسرائیل میں اپنے آپ کو پرامن نہیں محسوس کر رہا ہے۔ ایک عرصے سے یہودی اسرائیل سے جانے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل دن بدن کمزور سے کمزور تر ہوتا جا رہا ہے۔ اب ان کو اسرائیل کا وجود خطرے میں لگ رہا ہے، حتیٰ یہاں تک نوبت آئی تھی کہ اسرائیل نے یہودیوں کو وہاں سے جانے پہ پابندی لگا دی تھی۔ پھر جب یہ ابھی فلسطین کی جنگ ہوئی، اس بہانے سے اچھے خاصے یہودی وہاں سے نکل گئے، اور موجودہ زمانے میں اسرائیل کے جو عرب ممالک سے بڑھتے تعلقات ہیں، اس کو دنیا کے بعض لوگ یہ سمجھ کے محسوس کرتے ہیں کہ اسرائیل کی طاقت بڑھ رہی ہے، اس کی کامیابی بڑھ رہی ہے۔ ہم اس کو اس نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ اسرائیل کی ناکامی بڑھ رہی ہے۔ اسرائیل اپنی نامنی کو محسوس کر کے اب ادھر ادھر ہاتھ پیر مار رہا ہے۔ یہ حالات خراب ہونے کے صورت میں اس موقع پہ ہمیں کس اعتبار سے کہاں پناہ لینی چاہیے اور کہاں جانا چاہیے۔ لہٰذا اس اعتبار سے کبھی وہ امریٹ میں دکھتا ہے، کبھی وہ سعودیہ، اور بہرحال جو ممالک ہیں جہاں جہاں اس کے اختیارات ہیں اور جہاں رسوخات ہیں اور جس اعتبار سے ہیں، اس پہ بحث کی ضرورت فی الحال نہیں ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ خود اسرائیل کو بھی اپنی بربادی کا احساس ہے اور اپنی بربادی کو ختم ہوتے دیکھ رہا ہے۔ لیکن یہ 74 سال کا جو عرصہ گزرا ہے، اس میں کم ظلم نہیں ہے، اس میں عورتوں پہ ظلم ہوئے ہیں، بچوں پہ ظلم ہوئے ہیں۔ پوری دنیا بچوں کے لیے خاص نگاہ رکھتی ہے۔ اسرائیل نے فلسطینی بچوں کو اریسٹ کیا ہے۔ ایک کچھ سال پہلے کی ایک رپورٹ ہمارے پاس ہے کہ جس کی ہم لیٹسٹ رپورٹ نہیں تلاش کر پائے ہیں، سن 2000 کے بعد سے کچھ سالوں کے بیچ میں 8000 سے زیادہ بچوں کو اٹھایا گیا ہے، ان کو یا اریسٹ کیا گیا ہے یا ان کو قتل کر دیا گیا ہے، یا حتیٰ ان کے اعضاء آرگنز کو نکال کے بیچا گیا ہے۔ ظلم کس اعتبار سے اور کس حد تک ہے، یہ ساری باتیں نہ ہم کو معلوم ہے، اور جتنی معلوم ہے ان کو ہم بیان نہیں کر سکتے، اور جو بیان کر سکتے ان کو محسوس نہیں کر سکتے۔ بہت آسانی سے ہم نے سن لیا کہ جو بچے واپس اپنے گھر پہنچے ہیں، ان کا یہ عالم ہے کہ وہ خوف کے مارے رات میں سوتے ہوئے چونک کے اٹھ جاتے ہیں، ان کے دلوں میں خوف بیٹھا ہے۔ لوگ وہاں نارمل زندگی نہیں جی پا رہے ہیں، لوگ وہاں انسانی زندگی نہیں جی پا رہے ہیں۔ عجیب دنیا میں ایک تعصب والا معاملہ ہے، اور ایک عجیب سوتیلا پنا ہے کہ دنیا کے کسی بھی حصے میں کہیں ظلم ہوتا ہے تو ہر آدمی اٹھ جاتا ہے۔ لیکن نہیں معلوم کیا بات ہے کہ فلسطین 74 سال سے مظلوم ہے، یمن 7 سال سے مظلوم ہے، کسی نے اف تک نہیں کیا۔ ابھی کسی برادران عزیز میں سے کسی نے بہت اچھی بات کہی تھی کہ یوکرین کا ظلم سب کو نظر آتا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ فلسطین کا ظلم کسی کو نظر نہیں آتا؟ یوکرین کے مقابلے میں فلسطین کا ظلم بہت زیادہ ہے۔ یوکرین کا تو کوئی ظلم ہی نہیں ہے اس کے اوپر بنسبت فلسطین کے۔ کیا مشکل ہے یوکرین کو؟ یمن کے بنسبت یوکرین میں کیا ہو رہا ہے؟ لیکن یمن کسی کو نظر نہیں آ رہا ہے، فلسطین کسی کو نظر نہیں آ رہا ہے کہ جہاں کھلم کھلا لوگوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے اور مسلسل ظلم ہو رہا ہے۔ ہم سب کی انسانی ذمہ داری ہے، اخلاقی ذمہ داری ہے، مذہبی ذمہ داری ہے کہ دنیا میں جہاں بھی ظلم ہو، ہم ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں، چاہے وہ کسی بھی مذہب کی طرف سے ہو اور کسی بھی مذہب پہ۔ مذہب ہمارے لیے معیار نہیں ہے۔ اگر کبھی خدا نخواستہ ایسا اتفاق ہوا کہ کوئی مسلمان کسی نان مسلم پہ ظلم کرے گا تو ہم مظلوم کے ساتھ ہوں گے، ظالم کے مقابلے میں ہوں گے۔ ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ کس کا ہمارا، اس لیے کہ جو انسان ظالم ہو جائے پھر ہم اس کو دائرہ اسلام کے اندر دیکھنے میں شک محسوس کرتے ہیں۔ لہٰذا فلسطین کی حمایت کرنا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اگر ہم نے اس ذمہ داری کو نہیں انجام دیا تو روز محشر ہمارے مرنے کے بعد ہم سے یہ سوال کیا جائے گا کہ تم نے اپنی اس اہم ترین ذمہ داری کو کیوں نہیں انجام دیا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ تمام مناظرہ کر رہے تھے ابوالاسلام مولانا فیاض باقر صاحب کا، جنہوں نے بہترین انداز میں یوم قدس کے لحاظ سے ہمیں اس کی امپورٹنس سمجھائی اور بتایا کہ کس طریقے سے آج امت کو جو ہے یونائٹ ہونے کی ضرورت ہے۔ اسی پر ہم چاہیں گے آغا محسن عاشوری صاحب آپ سے ریمارکس فار مولانا فیاض باقر صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تشکر میکنیم، شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ As you mentioned about your idea about the Palestinian people and the other people, Alhamdulillah, evidence suggests us
the internal and external problems we can see in the Zionist regime, and the continual resistance of the people and the struggle of the Palestinian people, the revelation of the Russia's approach to the Zionist people, so Zionist regime. So we all believe that maybe the mulk remain, but with kufr, but not with the zulm. So it is very important. As you mentioned, zulm will be collapsed, will be demolished very soon. Maybe for some days, some years it remain, but not all the time. So as we believe that, as Rahbar Muazzam mentioned about this idea, after 25 years, the Zionist regime will be collapsed. We believe that, inshallah, it will be soon, inshallah. So thank you for accepting our invitation. Thank you so much. और इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने अगले गेस्ट को दावत देने के लिए। हमारे अगले गेस्ट हैं फिरोज मिठी बोरवाला, जो कि नेशनल जनरल सेक्रेटरी इंडिया पैलेस्टाइन सॉलिडारिटी फोरम के नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं। सो कैन वी हैव मिस्टर फिरोज मिठी बोरवाला? अस्सलाम वालेकुम सर, you need to unmute yourself. Yeah, I'm here. Thank you. Thank you. Yes, we must thank Mr. Ashuri and the Iran Culture House for again taking this initiative, and it's always a pleasure to be here. Syed is doing a wonderful job of anchoring the entire program. Thank you so much. Yeah. The point is that what we are witnessing currently in Palestine, in Jerusalem, was also the case in the year. Just one, I'll just get my notes straight. Yeah. Last year, during Ramzan, there was an attack on Sheikh Jarrah in East Jerusalem. And on the 7th of May, 2021, in fact, on the night of the Laylatul Qadr, there was another attack by the Israeli security forces on the Haram Sharif at the site of the Masjid Aqsa and the Dome of the Rock. Yes. So the point is that they are pursuing this matter relentlessly. They are waiting for the right opportunity, but their agenda is very clear. The agenda is to take over the Haram Sharif. The agenda is to destroy the two mosques. Absolutely. And to rebuild the third temple of Solomon. This is very clear as far as they are concerned. Absolutely. In fact, what is so very important at this time is that the attack since April 15th on the Haram Sharif was basically coordinated to disperse the Palestinian worshippers from the Haram Sharif, to ensure that on the Passover day, which was just a couple of days ago, that on the day of the Passover, they wanted to actually commit to animal sacrifices back on the Temple Mount that they refer to. So basically, the animal sacrifices were held in the Temple of Solomon after the temple was destroyed in 70 AD and earlier in 587 BC, 586 BC by the Babylonians and then by the Romans. The animal sacrifices had stopped. But now they want to begin the animal sacrifices, and they've taken the opportunity of the Passover festival, the Jewish Passover festival, to begin the animal sacrifices. And in fact, I just read today in the Israel Today news that a few Jews were then arrested because they were actually bringing sheep to the Haram Sharif. The point is that the Palestinians resisted it with all their courage and bravery, and this opened the eyes across the world. Absolutely. In fact, even the states that are clearly traitors, United Arab Emirates, the Saudis, Sudan, Egypt, Morocco, Bahrain, they had to also back down, Jordan included. They also had to all back down. These were the same countries that barely a month ago had all come together in Negev, in Israel, to coordinate their security matters.
You can imagine what is actually happening within the Muslim, Arab Muslim world, where meetings are held in Israel in the so-called Abraham Accords and the normalization process, as they call it. But history tells us that all these kind of collaborators and traitors finally are defeated, as will Zionist Israel. But again, going back to Iran and the contribution, Imam Khomeini's innovation in terms of declaring the last Friday of Ramzan as the Al-Quds Day, the Day of Jerusalem, was remarkable. This has been appreciated by the Palestinians to Yasser Arafat, to everybody. That this was very important, that during Ramzan, we remember this day as the Day of Jerusalem. And here we have Dr. Suresh Kennar and Dr. Surilam. Together, we had realized way back in 2011 and 12, when we organized the first Asian Convoy to Gaza, that we, whilst concentrating on Gaza, we now need to look toward Jerusalem and build a global movement for the cause of Jerusalem, to protect the Masjid Aqsa, the Qubbatu Sakra, to protect the Church of the Holy Sepulchre, the tomb of Prophet Abraham in Hebron, and the tomb of Prophet Joseph, I believe, in Nablus, and the Church of Nativity. Because as the attacks proceeded on the Muslims in the Al-Aqsa, at the very same time, Christians were being prevented from celebrating Easter. They were being prevented from going to the Church of the Holy Sepulchre. Yes, yes, so the Palestinian movement has taken responsibility to protect both the Islamic and the Christian heritages of Palestine, because the Christian and Islamic heritage of Palestine is the heritage of all humanity. This is the land of Moses. Moses did not come to Palestine, but it's definitely a land of Jesus and many other great prophets and saints who have walked on this land, and they are the common heritage of all humanity. So it's very clear that the Al-Aqsa and the Dome of the Rock have emerged as the symbol of the Palestinian resistance. They always were, and now they have grown to symbolize Palestinian nationhood and the Palestinian resistance. And again, these 35 acres of the Haram Sharif are the most contested 35 acres in the world, and they could be the trigger for World War III. That is where we actually stand. This is how serious this matter is. If they ever succeed in destroying the Al-Aqsa Mosque or the Dome of the Rock, then there is no stopping World War III. It will put into motion a series of events which will lead to World War III. Now let's go back into a little about history, because this is in 1929, when you had the the attack on the Al-Buraq wall. That time there were riots and about 200 Jews and Palestinians were actually killed. That was the kind of tension even before 47, 48 to do with the site of the mosque. But post 1967, we see attacks on the Al-Aqsa increasing. In 1969, a supposedly mad Australian guy tried to blow up the Al-Aqsa, but there have been attacks after that. But more ominously, and that is where the Indian fact also comes in, that we in India have seen the destruction of the Babri Masjid in Ayodhya, and how extremist Hindu groups mobilized and how they actually created the campaign. Similarly, in Palestine, in Israel, Zionist Israel, we have the returning to the Mount group that was created post 1967, the Khan-e-Kak, the extremist Jewish group, which you all know is very fanatical. Then again in 1973, you had Rabbi Shlomo Goren, Ashkenazi rabbi, who basically said that prayers should begin at Haram Sharif, because very interestingly said the Western Wall was an innovation during the Ottoman period, where Jews began to pray at the Western Wall. That was not really a Jewish practice, but it began in the 17th century. Then in 1990, you had the Lubavitcher Rabbi Menachem Schneerson, who said that Jews should start praying at the Haram Sharif, because there's been a theological debate within the Jews about whether it is permissible for Jews to go to the site of the Temple Mount and pray there. Because there is a section of Jews that say that we should not be doing it till the Messiah comes. The Messiah will then rebuild the third temple, and then we can go there, and so on and so forth. So there is one section that says wait for the Messiah, and the other says that the Messiah will only come after the third temple is rebuilt, and we must destroy the two mosques. So this जो नारा था भारत में मंदिर वही बनाएंगे,
वही नारा है इजराइल में, मंदिर वही बनाएंगे, इसलिए आरएसएस, बीजेपी, मोदी, नेतन्याहू, एरियल शरोन, इंक्लूडिंग नफ्तली बेनेट आर ऑल ऑन द सेम पेज। इसलिए इसी ड्यूरिंग मुझे याद है गुजरात 2002 कि जब गुजरात 2002 में मोदी दंगे करवा रहा था गुजरात में, तो जेनिन की कैंप्स में अटैक हो रहा था। इस बार इसी रमजान में उसी किस्म के बुलडोजर जो इजराइल चलाता है पैलेस्टीन पे, उसी किस्म के बुलडोजर आज भारत में चलने लगे हैं, और वो भी रमजान के दौरान। और इसी रमजान के दौरान फिर से अलक्सा पे भी अटैक हुआ है और जेनिन पे अटैक हुआ है। वो 2002 को याद करो और 2022 को याद करो, वो 20 साल में वो सब बातें दोहराई जा रही है। Then we had the emergence of the Temple Mount faithful in 1967. Gershon Solomon, hardcore Zionist fanatic, and his plan was to lay the cornerstone for the third temple on the Haram Sharif. They actually wanted to lay the foundations for the Temple Mount over there. Then you had the High Yevakam Yehuda Etzion group. His father was one of the founders of the Lehigh Terror group. We have, a number of the Temple Institute, the Ataret Kohanim, number of Jewish Zionist fanatical organizations that have come to the forefront post 1967 with the clear agenda to destroy the two mosques and rebuild the third temple of Solomon. In 1999, when I was there in Palestine, I'd gone on a pilgrimage actually, but I met a Palestinian archaeologist, historian. In 1999, he showed me a video of how the foundations of the Haram Sharif have been emptied. The soil has been removed. Today, the mosque stand only on their pillars. I'm talking about 1999, where the Muslim Waqf controls the top part of the masjids, but the Israeli state controls the foundations, the bottom part, the foundations. That means you're sitting in a building and the Israelis have removed the soil from your building. You can imagine where we are actually standing. But in 1927, there was an earthquake and the Aqsa had been harmed. Indian Muslims had contributed to the rehabilitation of that mosque. That's the kind of contribution Indian Muslims had at one point of our history. Now, interestingly, in 1987, we had the first Intifada, but in the year 2000, September 28th, we had Ariel Sharon marching to the Haram Sharif and saying that this is going to be the place for the Jewish temple. September 28th, there were riots because of Sharon's march to the temple. And after 5 months in the elections, Ariel Sharon came to power. And we know that Ariel Sharon, Netanyahu, Modi are all from the same kind of understanding. Now, what is more worrying is that until 2003, there was a law that only 3 Jews at a time could go to the Haram Sharif. But in 2009, they began to change but after 2003, they changed their laws where 50 Jews can now go to the Haram Sharif. In 2009, for the first time, you had a member of the Knesset, Yitzhak Aronovich, of Israel Beteinu, a hardcore Zionist fanatical political party in the parliament. And then in 2015, again, large attack on the Aqsa, Palestine resisted. But in 2018, Netanyahu removed the ban on the Jewish senators from visiting the Haram Sharif. So the point is, on one hand, we have the resistance in Palestine, which has again fended off this massive attack on the Al-Aqsa. We know that Gaza is far more stronger. Last year, the Gazan resistance proved that if you go to vacate, attack Sheikh Jarrah, again at Jerusalem of East Jerusalem, if you're going to attack Al-Aqsa, the resistance in Gaza will not wait quietly. We will take on the Iron Dome, we'll take on the Israeli army, we can fight out. And again, the Gazan resistance led by Hamas and others have said that we have the missiles to take you on for 6 months. We are here now. We are not going to keep quiet. On the other side, I think what I'm trying to say, things working in favor of the Palestinians. I do not take the UAE, Saudis, Bahrain, Sudan, Egypt, Jordan too seriously. These countries are collaborators. But on the other side, let us see what is happening with the resistance. Syria has held strong despite a massive global onslaught on Syria. And today, Syria is stronger than before. And
all these crooked collaborators like UAE and all are today running to Syria to talk to them. Yemen has taught a lesson to the Saudis. So now there is a division between the Saudis and the UAE on the question of Yemen. But Saudi is far, far more weaker because of its genocidal war on Yemen. And today, actually, the largest genocide in the world is in Yemen, and the world is not speaking about it. Everyone shouts Ukraine, Ukraine, but the biggest genocide in the world is in Yemen. Absolutely. Yemen continues to hold strong, and Yemen is winning. And Yemen has weakened the Saudis, both militarily and in terms of the oil resources. And today, I would like to make a very important point here. I stand with Russia on its attack on Ukraine for very clear reasons. Because Ukraine was about to be a part of NATO, Ukraine would have got nuclear missiles and Russia had no choice. If tomorrow Ukraine had become part of NATO and had nuclear missiles and then Russia took action, then it would be in World War III very clearly. We are as it is into World War III. But because of the involvement of the Azov militias, which are Nazi militias who trace themselves back to Stefan Banderas of the Nazi brigades in Ukraine, and it is through Ukraine that the German Nazi army had marched to Russia, and until 20 million, 2 crore Russians. That is why Russia, knowing its history, had to intervene in Ukraine. And let us understand that the war did not start in February 24th. The war started in 2014 when the Ukrainian army and the Nazi militias were attacking the Donbass ethnic Russian population. 14,000 Russians, ethnic Russian Ukrainians have died. Putin was willing to settle it according to the Minsk Accords. The Minsk Accords were drawn, but the Americans did not allow it because otherwise Donbass would have been an autonomous part of Ukraine, but it was not what Zelensky wanted. The other party let us understand that Ukraine was known as the second Israel. Zelensky has very clearly stated that Ukraine will become the second Israel and will not be a liberal democracy like other European countries, but will now be a security state like Israel. So the Khazar influence, the Khazar origins of modern Israel, they all came from Ukraine, and how Ukraine was taken over by the neocons like Victor Nuland to the Kolomoisky's, Zelensky, and how they were the Bidens, and how they had actually created Ukraine into another Zionist state, which would have threatened Russia and a lot more many countries. But today, Russia has taken that intervention and has weakened NATO. So an American that has been weakened post-Iraq, post-Afghanistan, post-Syria, post-Yemen, where the West is in decline, where the Anglo-Saxon world, which is aligned closely with Zionist Israel, is on the decline, where America is now actually trying to make a deal with Iran on the nuclear issue, which is why the UAE and the Bahrainis keep on running to Israel. This normalization pact is not only about Palestine, the normalization pact is an anti-Iran pact. Okay, so in that context, we are witnessing some very interesting phenomena happening where the resistance led by Iran, Iraq, Syria, Palestine, and Yemen is growing stronger. The Western imperial bloc is growing weaker, and the Palestinian resistance continues to inspire us across the world. So here we stand on the cusp of World War III. Imam Khomeini and Iran's call for the awakening of the masses across the world, because in the Al-Quds call now people of all religions are marching. Leftists are marching, people of religion are marching, people who church are marching, people in India we have Hindus and Muslims commemorating Al-Quds. So the Al-Quds call has become a global anti-imperialist call for the liberation of Palestine. And that's all I'd like to say. Thank you. Thank you so much. Thank you so much, Mr. Firoz. I just like to, Syed, I just like to add one part. I forgot in terms of the program. Sure. See, one, it is very clear that Israel is now being, by B'Tselem and various other Israeli Jewish, human rights groups. Israel is an apartheid state is now not in a matter of debate anymore. It has been spoken about in that way by Israelis themselves. Yeah. Now, in terms of an initiative, as I said, we had organized a global march to Jerusalem in 2012, where we had convoys from Asia to Africa to Europe, all converging in, and we had friends from America, of course, who came by flight. Wonderful. But again, I think Iran needs to take the lead in organizing a global conference to protect the Al-Aqsa and the Dome of the Rock, and the Church of the Holy Sepulchre, and the Church of the Nativity, because, mind you, the Zionist agenda is also part of the ethnic cleansing of the Christian population of Iraq to Syria.
The Greater Israel project is in motion. That is why the wars in Syria, in Lebanon, in Iraq, where they want to ethnically cleanse the minorities and especially the Christian minority. So the task of our movement is to protect the Christians of this region because they are the original Christians of Jesus Christ. The Europeans and all came later. So the point is that we need to discuss all these things. A conference in Tehran is necessary, and a global initiative to protect the Masjid Aqsa and the Dome of the Rock and to liberate Palestine. I think the time has come. We could start with a global conference on Zoom, but a physical meeting sooner or later is required. And in fact, I say that in the coming latter half of this year, in October, November, I think we need to start marching again towards Palestine, as we did march for Gaza, as we did march for Jerusalem. We had to wait because of the wars in Syria, but things are stabilizing in that, not stabilizing, things are far better. But I think a massive people's initiative, both for Gaza and for the cause of Jerusalem, for the liberation of Palestine is required. That is what I propose. Thank you. Thank you so much. And lastly again, sure. Unfortunately, this year is 30 years of the India-Israel deal. I mean, the government-to-government contacts. Naftali Bennett will be visiting India this year, and we have decided to oppose his visit in a large way. So we'll be in touch with you on that as well. Thank you. ओके सो नाज़रीन, आप तमाम मुनाजरा और मुलाहिज़ा कर रहे थे फिरोज मीठी बोर्ड वाला को, जिन्होंने इतने बेहतरीन तरीके से और इनके अल्हम्दुलिल्लाह जो नॉलेज थी, थरो नॉलेज थी, वो तमाम हमारे साथ शेयर की, और फ़लस्तीन के जो दकीक और जो संगीन मसाइल हैं उनके ऊपर इन्होंने रोशनी डाली है। इनका हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और इन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं कि ये ऑन ग्राउंड इतना बेहतरीन काम जो है पैलेस्टीनियंस की सॉलिडारिटी के लिए कर रहे हैं। सो वी रियली वांट टू कॉन्ग्रेचुलेट यू फॉर दैट, एंड विद दैट आई वुड लाइक टू हैव रिमार्क्स फ्रॉम आगा मोहसिन आशूरी साहब। Thank you so much. Thank you so much, Mr. Michi Burbala. That was very nice, very beautiful speech. You mentioned about so many things that during this time we see in Zionist regime, especially about in the field of the foreign relation. As you mentioned, the Zionist regime has lost its friends, I think so, most of them, and including Russia, as you mentioned, exactly. And even its relation with its main supporters, like the United States, as you do not have the former conditions changed, their condition also changed. The American people, especially the Jewish of this country, are not supportive of Israel as in the past. So I think in this idea, as you mentioned, the formation of the anti-Israeli movements, we can see movements in the United States, we can see, and shows the isolation of this regime among the Jewish also of the United States and around the world also like this. True. And this is the very important, I think, not only the Muslim, not only the either religions, Jewish people also, they are against of the Zionist regime. It is very important. This is about just one field, about the foreign relations. And as unfortunately, as some Arab countries, they established their embassy in that Jerusalem also, but they wanted to support this regime. But during this time also, they created some problem for themselves also because of this idea. So I think about the foreign relation, Zionist regime has so many problems. And not only the foreign relation, in military also they have so many problems. As I mentioned that in Israel, you can see which had introduced itself to the world as the most powerful military elements. They have the most powerful military elements. But all this idea in propaganda, not the reality, is today surrounded in various ways of powerless, we can see.
against Palestinian rocket fire. When they send rocket fire to them, they cannot do anything. How they are the powerful and the access to of the resistance against of them. And as I mentioned, they told before that, they says, okay, we have the Iron Dome, nobody can attack to us like this. But no, what happened? That Iron Dome has become completely inefficient. So that is very important. You mentioned about these two ideas. That's very good and very important idea about the Jerusalem. But we believe that the one way remain. The resistance is very important for the Palestinian people. As we selected about the title of this webinar, the constancy of the Palestinian people, the symbol of QUDS is constancy. So we hope in future will be collapse very soon. Again, I believe that. And also most of the time I told to my friends, because when we live one things, after that it will be reality in the outside of us. Thank you so much, Mr. Mitiburwala. As you accept our invitation every year, you are the honorable guest every time for us. Thank you so much. Thank you so much. और इसी के साथ last but not the least हम अपने आखिरी मेहमान खुसूसी को जो है दावत देना चाहेंगे और उनके पेशेंस का बहुत ही एहतराम करना चाहेंगे और थैंक यू कहना चाहेंगे कि उन्होंने बहुत पेशेंटली अपनी बारी का वेट किया। डॉक्टर सुरेश खेरनार को हम दावत देना चाहेंगे, who is the president of India Palestine Solidarity Forum. So can we have Dr. Suresh Khirnar? नमस्ते। सबसे पहले तो मैं ईरान के वर्तमान भारत में के जो भी पदाधिकारी है, तहे दिल से उनको शुक्रिया देना चाहूँगा कि इस ढंग का कार्यक्रम मेरे हिसाब से तो मैं तो 5-6 बार अटेंड कर चुका हूँ। एक बार बम्बई में भी फिजिकली आपके साथ में बैठने का और रात का खाने का भी मुझे सौभाग्य मिला है। और जिस ढंग से डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने दलितों को कॉन्फिडेंस दिलाने के लिए भीमा कोरेगांव दिन मनाने का ऐलान किया, यही आयतुल्लाह खोमेनी का हिस्टोरिकल कंट्रीब्यूशन अल कुद को लेके है। आज से 53 साल पहले उन्होंने ये जो शुरू किया है, उसके प्रति भी मैं अपनी खुद की एक तरह की भावना व्यक्त करता हूँ कि एक बहुत बढ़िया कार्यक्रम उन्होंने ऐसा ऐलान किया, जिसको आज बचाने का दिन के तौर पे कहिए या उसको याद करने के तौर पे कहिए, आज हम लोग इकट्ठा हुए हैं। आप लोगों ने मुझे मौका दिया है। देखिए, ह्यूमन सिविलाइजेशन के दौर में आज का वर्तमान अमेरिका ये 400-500 साल पहले इसका वजूद नहीं था। अगर इस ढंग से रेड इंडियंस और पुराने अमेरिकन रहवासी अगर आज दावा करे कि हमको हमारा अमेरिका चाहिए, तो आज बिडेन से लेकर डोनाल्ड ट्रंप से लेके सभी को अमेरिका खाली करना पड़ेगा। इस ढंग से न्यूजीलैंड, इस ढंग से ऑस्ट्रेलिया, दुनिया के कितने मुल्कों को इस ढंग से खाली करने का ये आएगा। अगर यही तर्क जो आज ज़ियोनिस्ट लॉबी दे रही है कि हमारा अपना मुल्क है, हमारी अपनी जगह है, ये पैमाना लगाने से पूरे विश्व भर में तबाही मच जाएगी, जो वर्तमान भारत में भी हिंदुत्ववादी फोर्सेस शुरू कर रहे हैं। यहाँ का बुद्धिज्म का 2500 साल पहले का इस ढंग से इन लोगों ने उसको बर्बाद करके भगाया और जो कहाँ चला गया अभी पूर्व में, अगर वो बुद्धिस्ट लोग अगर दावा करे कि वर्तमान भारत के कितने मंदिर धोखे में आ जाएंगे, इन सब बातों का कोई अंत नहीं है। तो ज़ियोनिस्ट लॉबी जो इजराइल में गत 70-75 साल से जो कर रही है, ये बहुत गलत बात कर रही है। ये है वो इजराइल, जब वो बना तब ये था पैलेस्टाइन और ये है आज पैलेस्टाइन।
इस ढंग से दुनिया के हमारे अपने आंखों के सामने किसी मुल्क का इस ढंग से हिसाब हो जाना, ये मानवता के लिए बहुत बड़ा कलंक है। और महात्मा गांधी ने आज से लगभग 90 साल 80 साल पहले ऐलान किया था कि ब्रिटिशों का ब्रिटेन, फ्रेंचों का फ्रांस, उसी ढंग से फिलिस्तीनियों का फिलिस्तीन। उन्होंने इजराइल के निर्माण होने के पहले ही विश्व को आगाह किया था कि इस ढंग से किसी राष्ट्र का निर्माण करना गलत बात है, क्योंकि ये कौन लोग हैं? ये सब के सब यूरोप अमेरिका में वेल इस्टेब्लिश लोग थे। और इन्हीं के में से निकले हुए जो विचारवंत है, नॉम चोम्स्की से लेके नोएल हरारी तक, उनके अगर बातों को आंखों के सामने लिया जाए तो जियोनिस्ट का पूरा के पूरा बिल्डिंग खत्म हो जाता है, कोलैप्स हो जाता है। कौन आदमी कहां से पैदा हुआ है? इसलिए ये जो रेशियल बात, एक इनको खुद को आज से कम 100 साल पहले हिटलर के द्वारा सही नहीं पड़ी थी, आज उसी ढंग की प्रैक्टिस ये लोग खुद फिलिस्तीनियों के साथ में, जिस ढंग से गाजा में मैंने देखा है, फिरोज भाई और हम लोग जब गए थे, 1 हफ्ता थे, अब क्या हालत बना के रखी हुई है। इस ढंग के दुनिया के किसी भी जन समूह को ऐसा जेलों के जैसा रखना, इस अमानवीय हालत में रखना, उनके सैनिटेशन से लेके उनके इलेक्ट्रिक, उनके कम्युनिकेशन से लेके हर तरह की बात को, और बच्चों के साथ में क्या व्यवहार है, किस ढंग से बच्चों के साथ में क्या चल रहा है। मुझे तो एक तरह से मुस्लिम कंट्रीज का वर्तमान व्यवहार इसलिए भी ठीक लग रहा है कि ये फिलिस्तीन का मामला मुसलमानों का नहीं है, ये सिद्ध होता है। ठीक है, वो अपने खुद के स्वार्थ के कारण, मैं दोबारा ईरान की तारीफ करना चाहूंगा कि ईरान अपने मुद्दे पे दबा, यानी ईरान की सही इंसानियत के प्रति, सही मानवता के प्रति, सही मानवाधिकार के प्रति कमिटमेंट इस बहाने दिखती है। और ये जो मुल्क जिस ढंग से इजराइल के साथ में एक तरह से, जिसको हम लोग बोलते हैं हनीमून मनाना शुरू कर दिए है, ये इनका इस्लामीपन क्या है, इनका अपना मुस्लिमपन क्या है, ये भी दिखा दे रहा है। इनका अपना खुद का दावा रहा है, हम असली इस्लाम के पैरोकार है, हम असली इस्लाम के हैं। तो मैं बार बार कहता था, मैंने तेहरान में भी अहमद निजाद साहब के सामने कहा था कि पैलेस्टाइन का विषय ये सिर्फ मुसलमानों का विषय नहीं, ये मानवाधिकारों का विषय है, ये इंसानियत का विषय है। जिस ढंग से वियतनाम का, जिस ढंग से अन्य देशों के मामले का मामला, वही फिलिस्तीन का भी मामला है। इसलिए हम, फिरोज भाई ने कहा वैसे, दोबारा मैं आज ईरान को, जो कि आज एकमात्र मुल्क है जो डंकी के चोट पे खड़ा है फिलिस्तीन के साथ में, मैं गुजारिश करूंगा इस ढंग से अंतरराष्ट्रीय एक तुरंत कुछ तो भी कंसल्टेंसी की जाए, जिसमें हम लोग शामिल होकर और गुफ्तगू करना चाहेंगे, और एक प्रैक्टिकल प्रोग्राम बाय रोड मैं एज ए इंडियन चैप्टर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पैलेस्टाइन सॉलिडरिटी फोरम, हम लोग लैंड टू लैंड कारवा दोबारा अल अक्स बॉस तक ले जाने का ऐलान करते हैं। धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, आप तमाम मुनाजरा कर रहे थे और मुलाहिजा कर रहे थे डॉक्टर सुरेश खेरनार को, जो कि प्रेसिडेंट है इंडिया पैलेस्टाइन सॉलिडारिटी फोरम के, और जिन्होंने अपने एहसासात को इस यौम कुद्स डे के मौके पर हम तमाम के सामने जो है वो शेयर किया है। सो वी वुड लाइक टू से थैंक्स टू ऑल ऑफ आवर गेस्ट एंड पैनलिस्ट, दे वर wonderful and their speeches were really enlightening. But इसी के साथ हम चाहेंगे आगा मोहसिन आशूरी से भी उनके remarks क्या हैं, साथ ही उनकी vote and thanks speech. Okay, just let me add thanks too much to Dr. Suresh, respected guest, respected speakers, and also that he mentioned about good idea. That was very useful, that was very nice. So I hope they listen to this idea, about the Palestinian people. That was, we should as a man respect to the people, respect to the all mankind, no difference between the men. So
But at last, at the end of this webinar, I should remark about that in one thing. In 2012, Iran had suggested one plan to United Nations about the Palestinian. This plan is based on democracy and purposes that in democratic action and based on public opinion, all the people of the occupied territories, including Muslim, Christian, Jews, and refugees in other countries, maybe such as Jordan or the other countries, participate in a referendum. They should participate in referendum and determine about the future of the occupied territories. So naturally, in order to reach the referendum stage, the resistance of the Palestinian people and the support of the countries for the access of the resistance is the priority and necessity. In other words, the continuation of the resistance will pave the way for a referendum, I think so. So this plan, I think maybe in future, they will reach about this plan. And all the people they knows, if we see any crimes around the world, we can find behind after these crimes, Zionist regime. Absolutely. It's not just only inside of the Zionist regime, around the world. As you see it everywhere, you can see some problem. They created so many problems for the nations, for the countries, and after that, but behind that, they cannot show them. So I hope in future this plan will be announced to the all countries, and also the all countries push the Zionist regime to accept this plan. So that was very nice. Thank you so much, Dr. Suresh. And that is very beautiful speech. We should, all of you, we should respect to all. We should respect to you, especially because to accept our invitation. Thank you so much. Just let me at the end, thanks to all speakers again. Sure. And just let me first, Hujjatul Islam Maulana Aslam Rizvi Sahib, thank you so much to accept our invitation. Dr. Sonilam, also thank you so much to accept this invitation to participate and deliver your speech. And Mufti Manzoor Ziai, Maulana Mufti Manzoor Ziai, Hujjatul Islam Maulana Fayaz Bagher Sahib, thank you so much. And Mr. Firuz Mitibur Wala, every time we will disturb you about to accept our invitation, especially about he's a specialist in the Palestine. Yes, he's a specialist. For this reason, we invite him to deliver his speech in this point. And Dr. Suresh Karyanar, thank you so much again and again and again, because you accept our invitation. So that was very useful. I think for me, that was very useful. Absolutely. Webinar, thank you so much. And at the last, we should respect and we should thanks to best moderator, Khanum Shaiste. Thank you so much to accept. That was very moderating. That was very nice. And thank you so much again and again. Everybody, thank you. And okay, thank you. And also all audience, they listen to this idea, they listen to the speaker people, what they say, and that is very nice and enjoy
enjoyable webinar. Thank you again. Lastly, before leaving from this webinar, I would like to appreciate and just share this message which we have got from our viewer. His name is Umang Kumar, and he's saying, please convey my thanks to the organizers for making QUDS Day. Great selection of speakers, appreciated, and great facilitation. So this message was from Mr. Umang Kumar, who is appreciating all the work from Iran Culture House. So thank you so much, sir, and I really like to congratulate you for that, to have such an important topic, and with that to have such a great guest and panelist. साथ ही साथ अपने उन तमाम नाजरीन को हम जाते जाते अपने इस पैगाम के साथ छोड़ जाना चाहेंगे कि इंशाल्लाह बहुत जल्दी हम और आप जो हैं आखिरी जुम्मतुल विदा में जो है दाखिल होने वाले हैं, जहां पर हम और आप QUDS डे का मुशाहिदा करेंगे, जहां पर हम पैलेस्टाइन के लिए जो है स्टैंड लेंगे और में लोगों को बताएंगे कि किस तरीके से इस पर जबरन कार्रवाइयां हो रही हैं और इस मकबूजा जो कार्रवाइयां हैं इसके खिलाफ हम किस तरह खड़े हुए हैं। लेकिन साथ ही इस पुरआशूब दौर में जहां हर मुसलमान सेक्ट वो चाहे जिस भी कंट्री में हो, आज जैसे कि हम देख सकते हैं इस्लामोफोबिया जो है वो काफी प्रिवेलेंट है, तो ये किसी भी तरीके से एक अगर जबर हो रहा है तो वो सिर्फ फिलिस्तीनी मुसलमानों के साथ नहीं बल्कि दुनिया के हर ऑलमोस्ट खित्ते में जो है मुसलमानों को इसी तरह से ऑप्रेस किया जा रहा है। तो उन तमाम भाइयों के लिए और बहनों के लिए, उनकी सलामती के लिए आप जरूर जो है माह मुबारका में दुआ कीजिएगा और इंशाअल्लाह अपनी दुआओं में हमें भी याद रखिएगा। के साथ हमें दीजिए इजाजत। शुक्रिया, हाफिज। शुक्रिया। चैनल इमाम असर दावत इंसानियत।